प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। अगर अस वुचो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम हम बनियामत लकटन लकटन माइक्रोस्कोपिक यूनिटन हंद नमन सेल्स वन सेल इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चरल तो फंक्शनल यूनिट यह सेल आसान। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स सर्टेन फंक्शंस सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। प्रथ कह सेल युस अकिस ऑर्गेनिज्म यह परफॉर्म करान कह फंक्शंस। इट परफॉर्म्स सम फंक्शंस सच एज न्यूट्रिशन, excretion, transport, reproduction. Im process gamo cello zari. To perform these functions, the cell needs energy. Agar im functions yani ki nutrition, excretion, transport, reproduction, im cheez karna khatar namzan cell zarurat. Cells need energy. Energy. Amun energy at kadar zarurat asan, taqtich zarurat. Even when we are eating, sleeping or reading, we require energy. Even ki agar is aso kun saat shingit te aso ya para aso ya khema aso, tem saat te is energy zarurat. But where does this energy come from? Bush sawal aiti wana ki ye energy kat peth yiwan. Can you say why your parents insist that you should eat regularly? Aske as panin parent wana hamisha asa wana ki regularly khiyo se gaza. The food has stored energy which is released during respiration. Agar you food food has stored energy. Atma already stored energy using released during respiration. Therefore, all living organisms respire to get energy from food. Tawai tamam living organisms imun respiration asan zorat taki im gasi release energy gaza mas. During breathing, we breathe in air. Yeles breathing karan, yeles hava chama nima hava andar. You know that air contains oxygen. Ash pata air mas kya asan? Oxygen. You oxygen chama. We breathe out air which is rich in carbon dioxide. So you inhale karan oxygen. The exhale is karan kam yeles wapas is carbon dioxide. You chata havas mas asan. The air we breathe in is transported to all parts of the body and ultimately to each cell. Using air you tamaman jismakin tanan maz watan, the impact kara kam, impact ultimately wata prath cell maz oxygen wata each cell. Prath body receives oxygen. Oxygen wata prath body his tamaman cellen maz. Inhaled oxygen from the air helps us in the breakdown of food. You inhaled oxygen uses nimash. Inhaled oxygen uses nimash. It helps us in the breakdown of food. Breakdown of food. Uses gazash asa khamut. Chasa salan mas votmut. Tempachi breakdown gasa. The achinera energy. The process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration. This process, yani ki process of breakdown of food, process of breakdown of food in the cell, process of breakdown of food in the cell with the release of energy, is called cellular respiration. Cellular respiration using cell and mas using process breakdown gazok cell and mas magar release energy cellular respiration. Cellular respiration takes place in the cells of all organisms. Using this cellular respiration you should tamaman body cell and mas gasa. In the cell, the food glucose is broken down into carbon dioxide and water using oxygen. Agar is wucho prath kun cell mas cell using aschu at mans kam at mans glucose molecules yani food using is mano glucose asan you should break down into carbon dioxide and water. Carbon dioxide to water
using oxygen. Magar istimal kya is karan is cell oxygen. When breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. Yel zan ye breakdown of food gache, breakdown of food by oxygen gache, ach wana ase yasa gai aerobic respiration. Aerobic respiration. यानी कि सो रेस्पिरेशन यथ मज फूड ब्रेक डाउन गई सेलन मज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन तथ वन यह गई एरोबिक रेस्पिरेशन. फूड कैन आल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन. यह गजा हेको बे ब्रेक डाउन कर सेलन मज बगैर ऑक्सीजन इस्तेमाल करने. दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो ये जन यह ब्रेक डाउन ऑफ फूड गस ब्रेक डाउन ऑफ फूड विदाउट ऑक्सीजन तथ वन anaerobic respiration. यानी कि बगैर ऑक्सीजन इस्तेमाल कर. ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीजेस एनर्जी. युस जन ब्रेक डाउन गसान पत गजो इट रिलीजेस एनर्जी. इट रिलीजेस एनर्जी. एनर्जी रिलीज गसान. तो यह हेकोन अक इक्वेशन जरिए ते हयत यथ कन निमो ग्लूकोज C6H12O6 यह गो ग्लूकोज यानी कि फूड मालिक्यूल यह वनस सेल मज यह बे ऑक्सीजन इस्तेमाल कर. इट गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. यानी कि अत वापस नेरान यथ इक्वेशन मज बह हावान तह कि यह गो ग्लूकोज मालिक्यूल फूड मालिक्यूल यह सेल मज अत ईमेल ऑक्सीजन और वोत अत सेल मज गो ब्रेक डाउन. इट गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड वापस नेरान वाटर नेरान एंड एनर्जी रिलीज गसान. ग्लूकोज विद यूज ऑफ ऑक्सीजन रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी. ग्लूकोज यानी कि फूड मालिक्यूल यह कर ऑक्सीजन यूज तो रिलीज कर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी. You should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air. Organisms यमन yeasts वन यम organisms smallest organisms यम हेकान survive गसित in the absence of air. They are called anaerobes. यमन वन anaerobes. यानी कि नम जन ऑक्सीजन वराय air वराय in the absence of air ते हेकान जिंदा रूजित. They get energy through anaerobic respiration. यानी कि अमन मज energy हासिल करा through anaerobic respiration. In the absence of oxygen, glucose breaks down into alcohol and carbon dioxide. तो युस जन absence of oxygen च आसान अत मज glucose break down गसान alcohols मज and carbon dioxide. तो यह पोर अस नम जन इथे कन अत मज our muscle cells can also respire anaerobically but only for a short time. Us वुचन सान muscle cells इम त हेकान कुन सात कर respiration anaerobically मगर कुन मुद्दस ताई. When there is a temporary deficiency of oxygen, ये temporary deficiency कमी गस oxygen तेल इस करा कम सान muscles त करा कम इम करा तम सात in the absence of oxygen respire करा. During heavy exercise, fast running, cycling, walking for many hours or heavy weightlifting, the demand for energy is high, but the supply of oxygen is very less in the muscle cells to fulfill the demand of energy. अगर इस गसान heavy exercise गसान या running करा, cycling, walking करा वारियान घंटन या heavy weightlifting गसान, the demand यूजन energy हंस high आसान मगर supply oxygen आसान less muscle cells मस. तो ये demand पूर करने खतर तम साथ त अस गसान कम यूजन ग्लूकोज आसान मसलन मस यह गसान कम यह प्रोड्यूस कर लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी. यानी कि यह पान यह पोर अस मज रेस्पिरेशन ऑर्गेनिजम्स सेलुलर रेस्पिरेशन यूजन सेलन मज गस अत ज किस्म एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. थैंक यू.